Operation Ganga, the name given to the massive rescue op to bring back stranded Indians from war-torn Ukraine. The escalation that began on 22nd February resulted in the shutting of airspace over Ukraine. The Indian embassy in Ukraine had issued advisories urging Indian nationals to leave, but with uncertainties looming over, the students got stuck. The Modi government jumped into action, and over several meetings chaired by Prime Minister Narendra Modi, evacuation ops got a major push. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar got in touch with his counterparts in Hungary, Romania, Slovakia, Poland for assistance in evacuation via their territories within a span of few hours. Several flights arrived in India carrying stranded students who took a sigh of relief upon touchdown. Here's one student narrating his experience and that the Indian embassy took care like no other. जैसे हम पार हुए तमाम इंडियन एम्बेसी ने संभाल लिया, उसके बाद तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। ठीक है, सारा काम स्मूथली होता गया, उन्होंने खाना पानी सब प्रोवाइड कर दिया हमें। ठीक है, इनफैक्ट अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो शेल्टर में हैं और सही बता रहा हूँ 5 स्टार होटल जैसा शेल्टर रखा है उन्होंने, बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो रही है उनके साथ। तो जैसे इंडियन एम्बेसी ने संभाला फिर चीज़ें ठीक हो गई। Simultaneously, more meetings were on in India. Prime Minister Modi taking stock of the situation and deciding what could be done best. 4 union ministers, Kiren Rijiju, Jyotiraditya Scindia, General V.K. Singh and Hardeep Singh Puri, were rushed to Ukraine's neighboring nations to oversee evacuation ops, to reassure the students that they were not alone and that they will be rescued by the Modi government. Here's one Indian student narrating her experience to Union Minister Hardeep Singh Puri in Hungary. Many of our friends also gone to some other borders like Romania and all, but we felt that the type of accommodation we get here, food and the lovely environment, the cozy environment we get to leave ourselves from the tension which we have gone through in the job border is amazing and mind-boggling. Thank you sir for everything in the Hungary border. Simultaneously, special flights carrying Indian students touched down in India. The students clearly overwhelmed. जो हमारे पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे सीएम है खट्टर श्री मनोहर लाल खट्टर, मैं जिंदगी भर इनका आभारी रहूंगा। शायद ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आए कि मैं इतना सिचुएशन में वहाँ पे थे। जब हम ऐसी सिचुएशन की थी, गतिविधियां थी, हमारे सामने मंजर था, जेट्स जा रहे हैं, बॉम्बार्डिंग हो रही है, बच्चे रो रहे हैं एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग। उस टाइम पे हमें नहीं लग रहा था हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, घर लौट पाएंगे नहीं लौट पाएंगे। बट इवैक्यूएशन प्लान ऐसी सिचुएशन से हमें निकाल के लाना इतनी इजीली और इतनी जल्दी शायद पॉसिबल नहीं था जो हमारे लिए, जो हम सोच रहे थे। बट हम आए हैं, अपने घर पे वापस लौटे हैं। हम सो थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और हमारे सीएम खट्टर लाल जी ने जो हेल्पलाइन जारी की थी वो हमारे टच में थे, रेगुलर टच में, और बहुत जल्दी रिप्लाईज आ रहे थे। ऐसा नहीं कि हम रिप्लाई कर रहे हैं रिप्लाई नहीं आ रहे। हमें होप मिली गवर्नमेंट से और हमारी एम्बेसी से। Not just that, every incoming flight was received by a union minister, giving a warm reception to the students who spent a harrowing time in the last couple of days in Ukraine. मैं रोमानिया के बॉर्डर पे आने के बाद इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे दूतावास थे, तो वो हमें लेने आए। तो वहाँ से हमें एयरपोर्ट तक छोड़ा गया। फिर एयरपोर्ट के बाद हमें डायरेक्टली मुंबई में लैंड करने के बाद वहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री जी पीयूष गोयल हमसे मिलने आए थे कि सारे बच्चे ठीक है या नहीं, उनको कुछ तकलीफ हो गया या नहीं। सच में कि मतलब यही लगा कि भारतीय जो एम्बेसी है वो सच में अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। सच भारत सरकार, तो उसके लिए तो हम उनका शुक्रिया अदा ही कर सकते हैं। Meanwhile, more students kept arriving in Poland from Ukraine, and they shared their experience of the care they were handled with. Where were you studying? Ternopil. Yes. Are you happy here? Very happy, sir. While the Indian government carries on Operation Ganga, the students showed faith and trust in the Indian leadership, cheering for the Indian embassies across Kiev, Budapest, Bucharest, Warsaw, and Bratislava. हम मानते हैं कि इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प किया। इंडियन एम्बेसी ने जितनी जल्द हो सके उतना हमारे बारे में सोचा और हमें सभी को वहाँ से निकाला। मैं बहुत इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उसने हमारी इतनी ज्यादा मदद किया है, बहुत ज्यादा मदद की है। I had that trust in my Indian government that Indian government definitely bring us all home.
सो इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा। तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खारकीव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे, लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। Everybody knows the current situation in Ukraine. We and our parents were very scared about our safety in Ukraine. In the Indian Embassy in Ukraine and the Indian Embassy in Romania have helped us to come to evacuate us from the current situation and to move us back to our homeland India safely. The moment we have arrived in Bucharest, the Indian Embassy of Romania is with us from that point till now, and they are taking care of everything, that we don't face any difficulty in this whole traveling, and we are very grateful to each and every one who is a part of this evacuation. And we are glad that we are safe, and our parents are relieved that we are coming back home. जब से ये सिचुएशन का हमें पता चला है, हमारी एम्बेसी और हमारी यूनिवर्सिटी कांस्टेंट से हमारे टच में है और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। और आज भी जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ पूरी सिक्योरिटी थी, जनवरी से निकलने तक, और बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग को वीज़ा और इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस करके हम लोगों ने करके दिया है। हमें फूड और वाटर और सब प्रोवाइड किया गया है और बहुत अच्छे से हमें यहाँ तक लाया गया है। और यहाँ आने के बाद तुरंत ही हमें एम्बेसी कलेक्ट करने आ गई थी और उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से यहाँ तक लाया है। तो थैंक्स टू अवर एम्बेसी एंड अवर गवर्नमेंट एंड Here's Rashid Rizwan, a student who returned to India from Ukraine, recorded a video expressing his heartfelt gratitude to the Indian government. मैं अभी यूक्रेन में था और आज भारत आ चुका हूं, तो इसमें आप सभी जो भी हमारी हेल्प किए हैं भारत लाने में, उन सभी के लिए ये वीडियो है, धन्यवाद वीडियो है। इसमें भारत सरकार, भारत के एम्बेसी के लोग, इंडियन एम्बेसी के लोग जो पोलैंड में हैं, हंगरी में हैं, रोमानिया में हैं, जिन्होंने हमारी हेल्प की, देश के प्यारे नागरिक और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपके लाख कोशिशों की वजह से मैं और मेरे जैसे हजारों छात्र अभी यूक्रेन से भारत आ चुके हैं। और आप सभी ने बहुत बहुत मेहनत की, बहुत हम लोग को सपोर्ट किया। No hollow promises, but concrete action on the ground. The Indian ambassador to Romania, Rahul Srivastava, said something so reassuring to this student that he couldn't help but express his joy over it. जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उनका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, स्पेशली राउत सर का, जो कि हमारे साथ थ्रू आउट बने हुए थे। और उन्होंने स्पेशली मेरे को ये बोला कि आप अगर आप हमारे लिए रहते हैं वहाँ पे, अगर तो आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, अगर आप लास्ट बंदे भी रह जाते हैं तो मैं अपनी पर्सनल कार आपके लिए भेजूंगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच एम्बेसी और इन पोलैंड। Embassies of the US, the UK temporarily shut down in Kyiv after the situation worsened. But the Indian embassy is still fully functional, prioritizing the safe evacuation of Indian students. We are from Bukovinian State Medical University, Chernovitzy. As you all know, amid the crisis, we were all stuck in Chernovitzy and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania, and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. Others who were back in India safely recounted the sheer smoothness with which Operation Ganga is being conducted, with the Indian government leaving no stone unturned to ensure a safe return. Truly heartwarming. Though the Indian government is working round the clock, it seems India's chief opposition party, Congress, is up to its old tricks. Thousands of students have been evacuated, more are on their way, yet Congress leaders are creating chaos, raising doubts and scaring parents of students who are stranded. In times like these, such shameful behavior is being exhibited by the same party that has used every crisis in India to score brownie points. It is another thing that the country can see right through their agenda. Despite that, Congress party leaders simply refuse to change its disruption tactics, even during crucial operations like these. Nevertheless, the Indian government is making relentless efforts for the countrymen held up in a war zone with one goal. It won't rest till the last Indian is brought back from Ukraine.